में पढ़ रही हूँ और शायरी पढ़ रही हूँ। ये एक नज़्म है जो उनकी ही एक भतीजी ने लिखी है उनके इंतकाल के बाद, और वो इसका उन्होंने लिखा है, इसका उन्वान है तखलीफ का सफ़र। तखलीफ का सफ़र, ख्वाजा अहमद अब्बास को नज़र अक़ीदत। So this is my homage also to Abbas Sahab and a lot of other people in the audience, their homage to him. वो एक बेबाक शोख चंचल किरण थी, वो एक बेबाक शोख चंचल किरण थी कि जिसने जिस्म लागर में आँख खोली, फ्रेल बॉडी कि जिसने जिस्म लागर में आँख खोली, उसी के खूने जिगर की गर्मी से फिर वो शोला बनी, शफक बनी और मेहरे ताबा, शफक बनी और मेहरे ताबा कि जिसकी आतिश बयान किरणों से रफ्ता रफ्ता हुआ सारा जहां मुनव्वर। The whole world was like it. कि जिसकी आतिश बयान किरणों से रफ्ता रफ्ता हुआ सारा जहां मुनव्वर। तो मैं आपसे यंगर सिस्टर का तो वादा नहीं कर सकता जो विजडम है, एल्डर सिस्टर ब्रेविटी का वादा जरूर करता हूँ। इसलिए मुख्तसर में कुछ बातें कहूंगा। मेरी दिक्कत एक हो गई है कि सभी वक्ता यहाँ जो थे बोल चुके, सिर्फ मुख्य अतिथि अमिताभ बच्चन बाकी है, और अमिताभ बच्चन के पहले बोलना कुछ ऐसा लगता है। Members of the dais, ladies and gentlemen, बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बना दिया जैसे ये ख्वाजा अहमद अब्बास सालों मेरे लिए हो। बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें कर दी, मैं उसके आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सायदा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया, और जब से उन्होंने बीड़ा उठाया कि अब्बास साहब को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, तब से मैं उनके साथ हूँ। और बहुत सारी मीठी बातें उन्होंने बताई यूनिवर्सिटी के ज़माने की। एक बहुत ही खूबसूरत बात ये बताना भूली नहीं, जिस बस स्टॉप पर हम लोग सब इकट्ठा होते थे बस पकड़ने के लिए, 9 नंबर की यूनिवर्सिटी स्पेशल होती थी, बहुत सारे यार दोस्त हम सब, इनके साथ महिलाएं होती थी, हम लोग का अपना एक लड़कों का ग्रुप होता था। और लड़कों में एक का नाम था प्राण तलवार। और एक दिन ऐसा हुआ कि बस आई और भरी हुई थी, तो सब हमने कोशिश की कि घुस जाएं। हमने से कोई घुस नहीं पाया सिवाय प्राण तलवार साहब के। बड़ा निराश हुए हम लोग कि आज क्लास मिस हो जाएगी वगैरह, लेकिन बहुत ही दबे स्वर में मैंने बाद में सुना, पता नहीं किसने कहा था, सायदा जी ये। मैं कहा चलो अच्छा हुआ, प्राण जाए पर वचन न जाए। शवादन जी ने और जिन लोगों ने बात की उन्होंने बता ही दिया कि 46 वर्ष हो गए साथ हिंदुस्तानी को। अब्बास साहब के जो ख्यालात थे वो बहुत ही अलग थे। जितने लोगों ने उनके बारे में बात की इससे आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन जैसा वो सोचते थे वैसा वो करते भी थे। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। साथ हिंदुस्तानी जब उन्होंने बताया तो शायद आप में से बहुत से लोग न जानते हैं उसकी कहानी। एक उनके सलाहकार थे, उनके साथ काम करते थे, उनकी कहानी उन्होंने सुनी कि किस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गोवा जा रहे थे। गोवा क्योंकि पुर्तगाली कॉलोनियल रूल में भी था, तो वहाँ पर जाकर के तिरंगा वो फहराना चाह रहे थे शहर के बीचों बीच। उनकी कहानी थी, तो अब्बास साहब ने पूरी कहानी वहाँ से बनाई। और अब्बास साहब को लगा कि 7 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को चुनने चाहिए,
7 लोगों को ही उन्होंने क्यों चुना, ये भी उसके पीछे एक उनकी एक सोच थी। 7 रंग होते हैं हमारे रेनबो में, 7 का महत्व जो है वो काफ़ी अहम होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि जैसा कि अभी बताया कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से उन्होंने 7 ऐसे कलाकारों को चुना। उत्पल दत्त जो कि बंगाल से थे, उनको एक पंजाबी का रोल दिया। वो चाहते थे कि जहाँ से तुम हो उससे अलग भूमिका तुम दिखाओ, क्योंकि कहीं न कहीं अब्बास साहब इक्वालिटी में बहुत विश्वास रखते थे। तो मुझे उन्होंने एक मुसलमान का रोल दिया। मेरे मित्र अनवर अली को उन्होंने हिंदू बनाया। मधु जो कि केरल से थे, उनको उत्तर भारत से का एक रोल दिया। जलाल आगा थे जो कि मुसलमान थे, उनको महाराष्ट्र का एक रोल दिया। इस तरह करके एक मेल जोड़ करके उन्होंने ये फिल्म बनाई। और न जाने क्यों उनकी ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा। 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग, अपना सामान वामान ढो करके। रहने की कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का एक वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट क्रू सब एक साथ सोता था। चाहे आप कलाकार हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप स्पॉट बॉय, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस ज़माने में होल्ड डाउन होता था, पता नहीं आप लोग होल्ड डाउन समझते हैं कि पूरा बढ़िया पूरी बिस्तर जो है वो एक होल्ड डाउन में से बंद कर दिया जाता। एक तरफ तकिया होता था, फिर बाकी सब रजाई वगैरह उसमें गोल ऐसे बांध करके उसमें क्या करते। सब लोग अपना होल्ड डाउन खोलते थे, उसी के अंदर सो जाते थे, सो गए उसको लपेटा और चल रहे। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वही बगल में ही ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए। इस तरह से उन्होंने काम किया। पंडित जुगर जी की बात हुई अभी और आज यहाँ मौजूद हैं। पंडित जी को सबसे पहले प्रोत्साहित किया, अब्बास साहब ने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। एक ऐसा अवसर आया फिल्म में जहाँ पर अब्बास साहब ने कहा कि तुम अब काफ़ी दिन तुम शेव नहीं कर पाए और सभी लोग शेव नहीं कर पाए, तो तुम्हारी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई होनी चाहिए, तुम्हें दाढ़ी लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है लगवा लेते हैं। मैंने कहा ये पंडित जुकर है, ये हमारे खास हैं, क्या करके आपको दाढ़ी लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। पंडित जुकर जी क्योंकि बहुत ही व्यस्त मेकअप मैन थे, इन्होंने अब्बास साहब से कहा देखिए जिस दिन आपको दाढ़ी चाहिए उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं 7 दिन पहले आ सकता हूँ। तो जिसको भी दाढ़ी लगवानी है वो 7 दिन पहले लगवा ले। तो मैंने ये बात जब अब्बास साहब से कही कि जो 7 दिन पहले, कहा नहीं देखो करना पड़ेगा। देखिए पंडित जी जो हैं वो हमारे साथ मुफ्त में काम कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि बड़े मेकअप को बुलाएं। आप ऐसा कीजिए कि 7 दिन पहले आप दाढ़ी लगवा लीजिए। तो पंडित जुगर जी आए हुआ और दाढ़ी छिपका दी। उस जमाने में आजकल तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो गया ये सब काम। नेट वगैरह नहीं होता था, एक एक बाल लेकर के चिपकाना पड़ता था और ये इनकी खूबी थी। तो पूरी दाढ़ी इन्होंने चिपका दी। अब मुसीबत ये थी कि उस दाढ़ी को कायम रखना था 7 दिन तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देवियों सज्जनों कि 7 दिन में नहाया नहीं, क्योंकि अगर नहाता तो दाढ़ी उतर जाती और पंडित जुगर साहब होते नहीं वहाँ। रात को सोते समय भी बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि तकिए पर अगर आप सर रखिए तो वो दाढ़ी के बाल निकल जाते हैं। तो एक बड़ी मुश्किल से एक दुपट्टा मंगवाया हमने। हमारे जो हमारे साथ कमरे में थे अनवर अली, वो हम लोग गए कहीं बाहर, एक दुपट्टा लेकर के आए, पंखे से उसको लटकाया, आत्मा कहने के लिए नहीं, पंखे से लटकाया उसको और वो मैंने गर्दन के नीचे लगाया और तकिए से तकरीबन 1-1.5 फुट ऊपर ऐसे में लेटा रहता। पंडित जुगर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कष्ट उठाया हमने 7 दिन, ये आपकी बदौलत था, आपको धन्य है।
A lot has been said about Abbas Saab. I have no words more than what already has been expressed about him. He was an incredible human being. There were many other qualities that were more professional in him, but for me he was always my Mamujan. That is how we all addressed him. Mamujan has some wonderful moments with us. Every time we had a problem and an issue, we would go to him and he would have an answer for us or a solution for us. I was great friends with Anwar Ali, Mahmood Saab's youngest brother, and because we were always together, Anu said that, you know, I think you should move into my home. So for many months and almost a year and a half, I stayed with him in his room in Mahmood Saab's house. महमूद साहब के पास एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी जो कि वो इस्तेमाल नहीं करते थे, वो उन्होंने अनवर अली को दे दी। तो हम लोग उस स्पोर्ट्स गाड़ी में घुमा करते थे। हम लोग समझते थे कि हम लोग बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो गाड़ी जो थी वो स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन उसमें पेट्रोल भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा कि यार चलो कहीं से भीख मांग के जितना भी है 5-10 रुपए का पेट्रोल भरवा लेते हैं, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर जाएंगे, और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा उतर जाएंगे गाड़ी से, गाड़ी वहीं छोड़ देंगे। और कई बार ऐसा हुआ कि जाते जाते गाड़ी बंद पड़ गई तो हम लोग छोड़ करके लोकल ट्रेन पकड़ के मामा जान के पास आते थे और कहते थे मामा जान हमारी गाड़ी जो है वहाँ पड़ी हुई है, पेट्रोल नहीं है। तो मामा जान बहुत ही उदारता से 100-50 रुपए हमें हमेशा देते रहते थे। But really, his entire thinking was one of equality. I do not know what the exact meaning of communism is. I don't know what the exact meaning of socialism is. But I would like to read to you his last page from the Blitz, in which he has written his will. And I think that this aptly describes what Khwaja Ahmed Abbas was and what he stood for. This is the last page of the Blitz that used to be edited and owned by Sheikh Karanjia. And the title of this article is called The Last Will and Testament of Khwaja Ahmed Abbas. This is being written by Abbas Saab himself. I, Khwaja Ahmed Abbas, aged 73, in sound body, in sound mind, though not of body, want to say this towards the end of my life. Not everyone lives up to the age of beyond 70. Therefore, let there be no weeping or lamentation at my death. I will suggest the following procedure for my funeral. A Maharashtrian Lazim band should be at the head of the funeral procession. Kamlakar will arrange the music. Kamlakar was a very close associate of his, which will go along the beach, entering it via Birla Lane, pass along the sea, which I loved. Lazy music will accompany the funeral up to Gandhi's statue only, from where the pyre will be transferred to a lorry, which will take it to the municipal burial ground on Queen's Road, the place where my late wife, Muji, was buried. I want to be near her, though by now she must have been reduced to dust. Well, I would like to be reduced to dust in the same place, though it will be difficult to locate her grave. It was near the northwestern gate of the cemetery, so try to bury me as near to that as possible. I am still an agnostic, that is, I don't know about religion. I believe in one God, therefore I may be a Muslim, but all religions believe in one divinity. I think the whole humanity is one and believes in one God who has no shape or form. Therefore, I am inclined to believe that nature is God. I am leaving no property to be divided among my heirs. I have but one daughter, Ushi, and I've already paid her whatever I could. I'm sorry I cannot leave anything else. I'm sorry I cannot leave anything else. I hope my junior relations will not mind it.
All my books, it is the only property that I am leaving, will belong to Naya Sansar Trust, including flat number 1 in Philomena Apartments, which I hope to buy over with my own money. I do not know about heaven and hell. I have experienced both in this life, so I am prepared for whatever comes my way in the life hereafter. I know that love and sacrifice of humanity is good and beneficial to all, and causing injury and injustice to other human beings is hell. I have lived according to this religion, which is a part of all religions, including Islam, in which I was born and brought up, and the Islamic culture which I have imbibed. So I take leave of all with a smile of understanding and love. Love me if you can. That is the Fatiha that you may recite. One thing more. If you arrange a meeting to celebrate, not mourn, my death, let it be an all-religion affair. I will suggest 5-minute speeches by the following. 1. Ali Sardar Jafri. 2. Janab Shiko. 3. Indiraj Anand, within brackets, Vedant and Gita. 4. R.K. Karanjia, within brackets, Parsi. 5. Some broad-minded Christian. 6. Some rationalist Buddhist. 7. Some rationalist, nationalist Jain. About my kafan, a Muslim kafan may be used with one addition. The upper covering must be of last pages and Azad Kalam pages in Urdu and Hindi. These must be buried along with me because I lived and died for them. Shri R.K. Karanjia is hereby requested to retain the name of the last page in Azad Kalam and to entrust it to some progressive journalists like P. Saina, who will carry on the K. Abbas tradition. Adieu, goodbye all of you, my dear friends and relations. I don't know if we shall meet again, but if you want to meet me or converse with me, there are over 70 books. Open and start reading any of them, and you will meet my spirit. Or see any of the pictures I produce, and you will meet me. For the rest, love and love and love. Yours affectionately, Khwaja Ahmed Abbas. मैं क्या कहूँ? यार, it's very exciting for me. This is only my 8th movie, and now I have an animated version of myself. What did they say at the